students, how are you? I am Patel and today I am welcoming you to my YouTube channel. We are discussing our chapter number 3, that is money and inflation. In this video we are discussing about inflation, the last topic and the second part of this chapter, that is inflation. Concept, meaning, types and causes of inflation. So continue watch this video to further detailed information about the inflation, and exercise also is given in this video. So solve this exercise at home. If you have any problem, contact me. Okay, thank you very much. Students, today we are going to discuss about inflation, the second part of this chapter. In a simple sense, inflation means a rise in the general price level, यानी प्राइस का बढ़ना, कीमतें बढ़ना. Generally, people consider inflation to be a rise in the price of goods and services, but economics gives a clear meaning of inflation. First definition is according to Dr. A.P. Lerner. He said that a situation of excess demand over supply of goods is called inflation. Very easy and simple definition by A.P. Lerner. यानी ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर डिमांड सप्लाई के ऊपर एक्सेस यानी बढ़ती है, ज़्यादा होती है, दैट इज़ inflation. Second, according to A.C. Pigou said that inflation is said to occur when monetary income rises faster than real income. Yes, he said that monetary income बढ़ती है faster, झड़प से, किससे? रियल इनकम से. यानी रियल इनकम से जब मॉनिटरी इनकम बढ़ जाती है, दैट इज इन्फ्लेशन. द कॉन्स्टेंट एंड स्टडी इंक्रीज इन प्राइस leads to decrease in the purchasing power of money. Dr. J.M. Keynes believes that the real situation of inflation is created with increase in money income beyond the level of the full employment of factors of production. Keynes that उसकी रियल सिचुएशन क्या है इन्फ्लेशन की, वो कहाँ से क्रिएट होती है? विद द इंक्रीज इन मनी इनकम बियॉन्ड द लेवल ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट. फुल एम्प्लॉयमेंट भी हो, लोगों की इनकम भी बढ़े, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो इफेक्ट करता है, दैट इज इन्फ्लेशन. अकॉर्डिंग टू द अबव डेफिनेशंस ऑफ इन्फ्लेशन, वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन आर गिवन. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन, सेकंड टॉपिक. फर्स्ट, कांस्टेंट राइज इन प्राइस लेवल्स. यस, we can say that price is constantly up, rise, that is inflation. Second, price rise in sectors of economy, that is all sectors, सभी सेक्टर के अंदर प्राइस अप हो, दैट इज इन्फ्लेशन. थर्ड, परचेसिंग पावर डिक्रीजेस, यानी परचेस पावर जो होता है, खरीद शक्ति जिसे बोलते हैं, यानी वैल्यू ऑफ मनी, वो डिक्रीज, कम हो जाती है. फोर्थ, द राइज इन प्राइस लेवल ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट इज इन्फ्लेशन, यानी प्राइस बढ़ना, प्राइस का लेवल बढ़ना आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट, ओके, पूर्ण रोजगार के बाद, दैट इज इन्फ्लेशन. सम अदर पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड एज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्फ्लेशन. कुछ और हमें यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं जो हमें ईजीली समझ में आ जाएगा कि यही इन्फ्लेशन है. फर्स्ट, व्हेन गवर्नमेंट हैज़ केप्ट control over and suppresses increase in price levels via rules, law and subsidies, it is considered inflation even if there is no price rise. It is called suppressed inflation. यानी जब गवर्नमेंट कंट्रोल करती है ओवर सप्रेसेस इंक्रीजेस, प्राइस लेवल का जो इंक्रीज होता है रूल के द्वारा या लॉ और सब्सिडी के द्वारा, इट इज़ कंसिडर्ड इन्फ्लेशन, तो वो इन्फ्लेशन होता है. इफ़ देयर इज़ नो प्राइस राइज, जब प्राइस नहीं बढ़ती, इट इज़ कॉल्ड सप्रेस्ड इन्फ्लेशन. सेकंड, if in an economy of a shorter period of time, if there is an increase in the price of limited goods or services, then it is not inflation. अगर इकोनॉमी के अंदर शॉर्टर पीरियड के यानी कुछ समय के लिए ही इन्फ्लेशन होता है या किसी प्राइस इंक्रीज होती है लिमिटेड गुड्स या सर्विसेज के अंदर, दैट इज़ नॉट इन्फ्लेशन, वो इन्फ्लेशन नहीं है, उसके क्राइटेरिया में नहीं आता. थर्ड, when some factors of production are unemployed and there is a price rise, then producers gets an incentive to produce more, so economic activity gets a boost and factors get employment. यानी जब कुछ factors unemployed होते हैं, there is a price rise, वहाँ पर प्राइस बढ़ती है, the producers get an incentive, producers को incentive मिलता है तो produce more and economic activity gets a boost, economic activity में boost होता है, बढ़ जाती है, and factors get employed, कुछ फैक्टर्स एम्प्लॉयज़ होते हैं, ओके, इनको रोज़गार मिलता है. प्रोडक्शन राइज एंड प्राइस फॉल,
तब प्रोडक्शन बढ़ता है लेकिन प्राइस उसकी गिर जाती है, फॉल यानी गिर जाना. If there is unemployment in factors of productions leads an economy, the increasing price of goods or services will allow employment to increase production to decrease the price of goods. And services. Therefore, means constant increase in price levels in all sectors of economy even after full employment is considered inflation, and it proves to be harmful for economy. Now the next topic, causes of inflation, the most important question of this chapter, that is causes of inflation. Inflation means constant increase in price of goods and services in all sectors of economy. The two major factors affecting the price of goods and services, demand and supply. Yes, we discussed in our standard 11th this topic, demand and supply. So the major factors affecting inflation are first increase in demand and second increase in production cost. Increase in demand, first topic. There is an increase in demand of a product which leads to the increase in price. If the supply is not provided, or if they are provided at a slower rate than the increasing demands, then there is an increase in price of the product. यानी कि जब डिमांड होती है किसी चीज़ की, उसकी प्राइस जब लेट्स टू इंक्रीज बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाता है, यानी प्रोवाइड जो करते हैं वो कम हो जाता है, तब स्लोअर या फिर स्लोअर रेट के अंदर इंक्रीज होता है, दैट इज़ डिमांड. सो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज़ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट. ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस बढ़ जाएगी. इफ़ देयर इज इन्फ्लेशन ड्यू टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड एज कम्पेयर्ड टू द एग्रीगेट सप्लाई, दैट इज़ कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन. यानी एग्रीगेट डिमांड से एग्रीगेट सप्लाई जब क्या होता है, इंक्रीज होता है. ओके, यानी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है सप्लाई से, दैट इज़ डिमांड पुल इन्फ्लेशन. द मेजर रीजन्स फॉर इंक्रीज इन डिमांड आर फॉलोइंग. फर्स्ट, increase in supply of money. Monetarials is considered inflation as a purely monetary phenomenon. According to them, if there is an increase in money in a state, the individuals earn more income, because of which the demands of necessities increase. Against the increasing demand, the supply remains steady, leading to increase in price and inflation. Matlup says that too much money chasing too few goods causes inflation. पैसे बहुत ज़्यादा है लेकिन गुड्स खरीदने के लिए वो नहीं काम आते, दैट इज़ इन्फ्लेशन, क्योंकि इतना गुड्स नहीं है उसके पास. ओके. सेकंड, इंक्रीज इन पब्लिक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. द गवर्नमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया इज इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. गवर्नमेंट इंकर्स एक्सपेंडिचर आफ्टर इंस्टॉलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स, प्रोविजंस ऑफ बेसिक यूटिलिटीज और प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, which increases the supply of money in the economy. This increases the incomes and demands of the people, which led to rise in the general price level. Thus, if the government circulates money in excess of the production of goods and services in the economy by increasing public expenditure, then the rise of general price level gains momentum. यानी कि इंक्रीज होना, पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज होना, जाहिर खर्च जो होता है गवर्नमेंट का वो ऑटोमेटिकली अगर इंक्रीज हो जाए तो हम समझ सकते हैं कि वैट इज़ इन्फ्लेशन, यानी वो इन्फ्लेशन की कंडीशन है जो ईजिली इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर समझा दी है इसके अंदर. थर्ड, वो पॉपुलेशन. इन इंडिया देयर इज़ 2% एनुअल इंक्रीज इन पॉपुलेशन लीडिंग टू एन इंक्रीज इन डिमांड्स ऑफ इंडिविजुअल्स. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन causes increase in the demands of basic requirements, and when the supply is sufficient the price level increases. When the population is constant but their purchasing power increases due to rise of their income, there is an increase in price levels. यानी ओवर पॉपुलेशन बढ़ जाना. ओके. सेकंड, एनुअल इंक्रीज इन पॉपुलेशन. हर साल 2% पॉपुलेशन बढ़ जाती है, लीडिंग टू एन इंक्रीज इन डिमांड्स ऑफ इंडिविजुअल्स. ओके. सो वी कैन से दिस वो पॉपुलेशन वो भी इन्फ्लेशन का रीज़न है. यानी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने के साथ साथ डिमांड और सप्लाई भी इस पर इफेक्ट होती है, उसके साथ साथ परचेसिंग पावर इंक्रीज़ होता है और इन्फ्लेशन हम देख सकते हैं. इंक्रीज़ इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो हमारा प्रोडक्शन होता है उसका कॉस्ट, उसका खर्च. द अदर मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस इज द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सप्लाई ओरिएंटेड इकोनॉमिक्स बिलीव्स दैट व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट देयर इज एन इंक्रीज इट्स प्राइस. यस, जैसे ही प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस भी बढ़ी जाएगी. ओके, वो आप समझ सकते हो इजीली. If there is an increase in cost of raw material, machines, electricity, water rates,
workers wages or transportation, there is an increase in price of goods and services, automatically बढ़ जाएगा. Yes, that inflation caused by the increase in production cost is called cost push inflation or supply shock inflation. Other reasons. The major reasons for inflation are: first, increase in demand; second, increase in production cost. But particularly practically, there are also other factors which can affect inflation. Even though the minor factors are for a short term, they cause a spike in price levels. Therefore, in industry based on foreign import, if there is an increase in import expenses, or if there is a shortage during contingencies, it can lead to price rise. तो automatically price बढ़ जाएगी. Yes, basically there is an increase in demand and production cost that leads to inflation. But the other minor factors are as follows: first, taxes and policy. The taxes and policy of the government causes inflation. The high increase in tax rates increases the production cost of the products, which leads to rise in inflation. Second, increase in price of import. In India, 70% of petroleum products are supplied via import. If there is an increase in price of crude oil in international market, then there will be an increase in rates of petrol and diesel, which can also increase the price of the other products. Taxation policy जैसी इंडिया गवर्नमेंट की रहेगी, ओके, वैसे ही क्या होगा, इन्फ्लेशन आ सकता है. इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इंपोर्ट प्राइस 70% पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का सप्लाई इंपोर्ट होता है, ओके. तो जैसे ही इंपोर्ट बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ेगी इंपोर्ट की, और प्राइस बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन आ जाएगा. थर्ड, स्कैसिटी. When there is a scarcity in terms of raw material, electricity, or any requirement of products, it leads to increase in price level of the goods or services. किसी की भी scarcity हो, ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस बढ़ी जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि वो ख़त्म होने वाली है. So, if the scarcity prevails for a long period during the production or is extensive in nature, it can cause inflation. तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन आ ही जाएगा. तो ये सारे रीजंस थे इन्फ्लेशन के. तो ये टॉपिक हमारे यहाँ पर फिनिश होता है. ओके, और ये है एक्सरसाइज जो आपको सॉल्व करनी है. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, कॉन्टैक्ट मी so I can solve your problem. Okay, I think you have got idea about money and inflation chapter. Okay, in this chapter we discussed about money and inflation together. Okay, so we finished this chapter in this video, and now we will start chapter number 4, that is banking and monetary policy, in next video. So continue watch this video.